नाउ अभी हम देखते हैं नॉन क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ CFLs। ये इम्पोर्टेंट है। तो तीन मेन नॉन क्लोजर प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन इज इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। सपोज L1 is given as a raised to n m b raised to n c raised to n, where m comma n are greater than or equal to 0, and L2 is a raised to n b raised to n c raised to m, where m comma n is greater than or equal to 0. Okay, then intersection will be L3 equal to L1 intersection L2 will be something a raised to n, b raised to n, c raised to n, where m comma n are greater than or equal to 0. ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ मोटा हम कंस्ट्रक्ट कर पा रहे थे कि अगर केवल दो ही अल्फ़ाबेट्स के बीच में डिपेंडेंसी हो, सिंगल डिपेंडेंसी, यहाँ पे एज का काउंट 20 के लिए मेंटेन करना पड़ेगा और 20 का काउंट सीज के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। डबल डिपेंडेंसी आ गई, इसलिए दिस इज़ नॉट अ CFL, नॉट अ CFL। अगर हम एज को पुश कराते हैं स्टैक के अंदर, 20 का रेस्पेक्ट उनको पॉप कर लेंगे, देन सी का काउंट कैसे मेंटेन करेंगे? हमारे पास ए और बी तो ओवर हो चुके होंगे, सी का काउंट कितना मेंटेन करना है वो डिपेंड करता है ए और बी पे, जबकि ए और बी पहले ही प्रोसेस हो चुके हैं, हम उनसे फर्दर आ चुके हैं। दैट्स वाई सी का काउंट हम मेंटेन नहीं कर सकते एग्जैक्टली ए और बी के बराबर, इसलिए दिस इज़ नॉट अ CFL। ओके, सो we can say that the intersection of the two CFLs is may or may not be a CFL. Intersection of two CFLs may or may not be a CFL. Why may or may not be not sure? Because sometimes suppose L1 is a raised to I, where I greater than or equal to 0, and L2 is a raised to I, where I greater than or equal to 2. So intersection will be L1 intersection L2 will be what? A raised to I, where I greater than or equal to 2, and this is CFL. Okay, that's why here I used may or may not be. Intersection of two CFLs is not always CFL. Okay, clear? Next, second non-CFL property is non-closure property of CFL is complementation. As we seen that L1 intersection L2 is not closed, not a guaranteed CFL, so we'll use this property, this non-closure property, to prove that the complementation of complementation of a CFL may or may not be a CFL. Okay, let's consider that L1 intersection L2 by using De Morgan's law will be L1 intersection union L2 intersection का whole intersection. Okay. Let's consider that the complementation of a CFL is CFL. Assume that complementation of a CFL is CFL. ओके, अगर हमने एज्यूम किया तो L1 CFL है, उसका कॉम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे CFL हो जाएगा, तो CFL का कॉम्प्लीमेंटेशन CFL हमने एज्यूम किया है, तो दिस बिकम CFL यूनियन CFL का कॉम्प्लीमेंटेशन CFL, दिस विल बिकम ऑल्सो अ CFL का इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट। अब दो CFLs का यूनियन CFL हमें पता है, पहले ही हमने यूनियन प्रॉपर्टी देख चुके हैं,
तो इसका आंसर आएगा CFL का कॉम्प्लीमेंट। और CFL का कॉम्प्लीमेंट हमें पता है CFL होता है। ओके, ठीक है। तो आंसर फाइनल हमें क्या मिला यहाँ से, डी मॉर्गन लॉ से एक CFL। जबकि हमें पता है कि L1 इंटरसेक्शन L2 दो CFL लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन CFL नहीं होता, नॉट अ CFL। इसके इक्वल में हमें आंसर मिल रहा है इज द CFL। दैट मीन्स हमने जो अजम्पशन लिया था कि कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ CFL इज CFL, दैट इज रॉन्ग। हेंस वी कैन प्रूव दैट द कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ CFL इज नॉट अ CFL always. Okay, next topic. Next topic is difference. Third non-closure property is difference. Okay, suppose L1 is a CFL and L2 is also a CFL. Okay, the difference of these two is not a CFL. कैसे प्रूव करेंगे? लेट्स हमें निकालना है L1 माइनस L2, तो वी कैन राइट इट डाउन लाइक